Hello students, I am Satyanarayana Saha. You are watching SNS World YouTube channel. Today I am going to discuss History of Standard 8 second lesson, The Growth of Nationalism. Stars and Stripes, the flag of United States of America. ये है USA का फ्लैग. इसमें 13 states and the stars which are 15 number. 50 ठो स्टार है और स्ट्राइप 13 ठो है. रिप्रेजेंट द स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द यूनियन इन प्रेजेंट डे. सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन. अमेरिकन रिवॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है. द वर्ड्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस espousing the equality of all men and the inalienable rights of man electrified the atmosphere in America and outside. और outside में भी support मिला. The American Revolution inspired many revolutionaries in Europe later in the 19th century. American Revolution से यूरोप को बहुत सारा मोटिवेशन मिला. For instance, it encouraged Spanish and Portuguese colonies in Central and South America to rebel and gain their independence. इसका चलते यूरोप में भी रिवॉल्यूशन हुआ. The central achievement was the establishment of a republican form of government at a time when states in other parts of the world were governed by monarchies. जो किंग का द्वारा शासित होते थे वो लोग रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पसंद किए. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट रिटन रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन इवन फ्रेम्ड इन हिस्ट्री. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है फर्स्ट रिटन रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज स्टिल इन ऑपरेशन. अदर ग्रेट मैन ऑफ दैट पीरियड हु वर कंसीडर्ड द फाउंडर्स ऑफ रिपब्लिक आर थॉमस पैन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पैट्रिक हेनरी, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स एंड जेम्स मेडिसन. ये लोग का ज्यादा प्रभाव था और ये लोग बहुत आदमी को मोटिवेट किए, इन्फ्लुएंस किए. इसका चलते वर्ल्ड में बहुत सारा परिवर्तन आया. इन 1789 जॉर्ज वाशिंगटन वाज unanimously elected the first president of the United States of America. 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन को प्रेसिडेंट चुना गया. America's capital city was named in his honor. The 4th of July is celebrated as the American Independence Day. 4th जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. Important landmarks. क्या क्या घटना घटा था, कौन सा ईयर में. 1765 स्टैम्प एक्ट पास्ड. 1773 बोस्टन टी पार्टी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बैटल ऑफ Bunkers Hill. 1774 First Congress of Colonies at Philadelphia. 1776 Declaration of Independence. 1781 American War of Independence comes to an end. 1783 Treaty of Paris. 1787 Federal Government established in United States of America. उसका बाद आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. French Revolution was brewing while the War of American Independence was being fought. The conditions in France were no worse than the conditions that existed in other parts of Europe. On the one hand, there were autocratic, extravagant rulers, privileged nobles and clergy, and on the other landless peasants, jobless workers burdened by poverty and unequal taxation. उसमें जो सोशल सिस्टम था इक्वल अपॉर्चुनिटी पाते नहीं थे, इसलिए उन लोगों का अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं था. फ्रांस had been a strong and powerful state in the 18th century. She had seized vast territories in North America and islands in the West Indies. However, despite its outward strength, the French monarchy was facing a crisis which would lead to its destruction. फ्रांस बहुत डेवलप किया था, फिर भी उन लोगों का जो राजा था उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं था. फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस और एस्टेट्स. जो फ्रेंच सोसाइटी था वो डिवाइड किया गया था. देयर वर टू प्रिविलेज क्लासेस. दो ठो क्लास को प्रायोरिटी दिया जाता था, वो था क्लर्जी एंड नोबिलिटी.
These two were known as the first estate and second estate respectively. People in these two classes were exempted from almost all taxes. The life of the nobility was characterized by extravagance and luxury. वो लोग बहुत luxury life maintain करते थे. The rest of the people were called the third estate. They were the middle class, common people. They led a rest life. The oppressed workers formed many secret societies and often resorted to strikes and rebellion. Middle class आदमी revolt स्टार्ट किए. यह है लुइस 16, यह है इसका वाइफ मैरी एंटोनिटी. एट द हेड ऑफ फ्रेंच स्टेट स्टूड द किंग हु वाज रिगार्डेड टू बी एन एब्सोल्यूट मोनार्च. वो अपना जो चाहते थे वो रूल बना देते थे. वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक का वेलफेयर हो. लुइस 16 was the monarch of France when the revolution broke out. जब रिवॉल्यूशन हुआ उस टाइम राजा कौन थे? लुइस 16 थे. His beautiful but ill-advised wife मैरी एंटोनिटी, उसका वाइफ ब्यूटीफुल थे लेकिन उसका एडवाइस ठीक नहीं था. Squandered money on festivities and interfered in state appointment in order to promote her favorites. वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा इंटरफेयर करती थी. The state was in financial ruin. उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गया. Keeping huge armies and waging wars made matter worse. ये वोल्टेयर, ये रूसो, ये दोनों फिलोसोफर है. ये दोनों ज्यादा प्रभावित कर पाए. France in the 18th century produced many revolutionary thinkers. They steered the minds of French people. वो लोग फ्रेंच पीपल का माइंड को ज्यादा परिवर्तन कर सके. The clergy were the first to feel the want of the French philosopher. Voltaire, one of the most pungent critics and famous French writers of the time, believed that man's destiny lay in this world rather than in heaven. Writings attacking religion stoked the fires of revolution because the church gave support to autocratic monarchy. वो लोग जिस शासन चल रहा था उसका अगेंस्ट में गए और ज्यादातर लिखे. उसको पढ़कर आदमी लोग का थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ और वो लोग अगेंस्ट में गए. द फिलोसोफर राइटर Montesquieu thought about the kind of government that is best suited to man and recommended the principles of constitutional monarchy. However, it was Jean-Jacques Rousseau who asserted the doctrine of popular sovereignty and democracy. He recognized property in modern societies as a necessary evil. What was needed, said Rousseau, was a new social contract to guarantee the freedom, equality and happiness which man had enjoyed in the state of nature. वो लोग चाहते थे कि सभी आदमी किस तरह पीस में रह सके. He said man is born free but everywhere he is in chains. Because of his revolutionary ideas, Napoleon rightly observed there would have been no revolution but for Rousseau. Right at the beginning of Louis XVI reign there were hunger riots. उस टाइम हंगर रियट्स आ गया था, आदमी के पास खाना नहीं था. Yet the king and queen clamored for money. वो लोग अच्छा से रह रहे थे. 7 years war चला 1756 से 1763. Had meant defeat for France and thus a blow to the monarchy. वो लोग राजा का शासन को पसंद नहीं करते थे. राजा का शासन को वो लोग उठा देना चाहते थे. The French participation in the American War of Independence meant more expenditure. वो लोग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से प्रभावित हो चुके थे. The nobles and priests were privileged and exempt from taxes. Bankruptcy became a tragic reality for many. French people drew inspiration from the American War of Independence. वो लोगों को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ज्यादा इंस्पिरेशन मिला था. They were determined to stand against unjust autocratic government. वो लोग पूरा डिटरमिन्ड थे वो राजा का अगेंस्ट में.
In 1789, the King Louis XVI summoned the Estates General to raise taxes. On June 17, 1789, members of the Third Estate declared themselves the National Assembly. On June 20, 1789, the members of the Third Estate took an oath. वो लोग oath लिए कहाँ पर? टेनिस कोर्ट में, not to separate until a new constitution was framed. वो लोग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होने तक सेपरेट नहीं होंगे. This is known as the tennis court oath. उसको बोला जाता है टेनिस कोर्ट oath. On July 14th, the Third Estate surrounded the Bastille, a state prison. After 4 hours siege, they broke open the door. वो लोग तोड़ दिए. Freeing all the prisoners सबको निकाल दिए. Fall of Bastille marked the fall of autocracy. Many nobles and clergies fled the country and encouraged foreign governments to intervene in France against the revolution. The king and queen tried to escape. राजा और रानी दोनों चाहते थे कि वहां से भाग जाएं from France in disguise, but they were recognized and brought back as captives and traitors. उन लोगों को पकड़ लिया गया. July 14th celebrated as the National Day in France. July 14th को National Day मनाया जाता है फ्रांस में. France had destroyed feudalism and monarchy and founded new institutions based on liberty and equality. जहीं पर फ्रीडम रहा, जहीं पर इक्वालिटी रहा, उस बेस में वो लोग गवर्नमेंट स्थापित किए. King and Queen were tried and executed in 1793. The French Revolution was world-shaking event, जहां पर राजा और रानी को मार दिया गया था. यह है important landmark. June 17, 1789, Declaration of National Assembly by members of the Third Estates. June 20, 1789, Tennis Court oath. July 14, 1789, Fall of Bastille. यह डेडलाइन को याद रखना है. Consequence of the French Revolution, क्या इसका रिजल्ट रहा? A major result of the French Revolution was the destruction of feudalism in France. It destroyed all the vestiges of feudalism and liberated the serfs. All the laws of the old feudal regime were annual. Church lands and lands held in common by the community were brought by the middle classes. Privileged classes were abolished. A new democratic and social order in Europe emerged. एक तो democratic atmosphere लाया गया. The French Revolution inspired revolutionary movements in almost every country of Europe. इससे यूरोप में और जो कंट्री थे उसको इंस्पिरेशन मिला. And in South and Central America, for a long time, the French Revolution became the classic example of a revolution which people of many other nations tried to emulate. It spread the ideas of liberty, equality and fraternity. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया सभी देशवासी को मिला. लिबर्टी मतलब फ्री, इक्वालिटी मतलब समानता और फ्रेटर्निटी सभी का साथ अच्छा रिलेशन. The objective of revolution varied from place to place. In some countries, the aim of the revoluntaries was to overthrow of autocratic rules and abolition of serfdom. In some, it was the overthrow of foreign rule, and in some other, it was social, political, and economic reform. Thus, nationalism emerged as a major force. Revolution का तरीका अलग-अलग प्लेस में अलग-अलग था. किसी में गवर्नमेंट को चेंज करना, किसी में सोसाइटी को रिफॉर्म करना उसका ऑब्जेक्टिव था. द नेशनल असेंबली अडॉप्टेड द फेमस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. बाय 1791 ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप फॉर फ्रांस. नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप हुआ 1791 में. इट मार्क्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए रिपब्लिक. द आइडियल्स of the French Revolution had a strong impact on the Indian nationalists. Also,
इसमें इंडियन लोग को भी इंस्पिरेशन मिला। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी resonated in the hearts of the Indian leaders and inspired them to achieve their goal, independence from the British rule in 1947। इसमें इंडियन लोग भी बहुत सारे मोटिवेट हुए थे और इंस्पायर भी हुए थे और 1947 में हम लोग को भी आज़ादी मिला। Between 1799 and 1815, one man dominated Europe, Napoleon Bonaparte। He was a brilliant military leader who had the French armies a string of victories over every major European power। 1799 से 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट का ज़्यादा कब्जा रहा। उसका क्या अर्ली लाइफ था? नेपोलियन was born in 1769 at the island of Corsica। नेपोलियन जन्म हुए थे कब? 1769 में एक आइलैंड में, उसका नाम था कॉर्सिका। ही हैड ए मिलिट्री एजुकेशन, वो मिलिट्री एजुकेशन लिए थे और आर्मी में ज्वाइन किए थे 1786 में एंड वन एक्लेम व्हेन ही सीज्ड द पोर्ट ऑफ टोलन फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1793। उसका परफॉर्मेंस पहले से ही पता चल गया था। आफ्टर ओवरथ्रोइंग द डायरेक्टरेट गवर्नमेंट फॉलोइंग ए कुफ, Napoleon declared that France would be ruled by a consulate consisting of 3 consuls। वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हो, फ्रांस में 3 कॉन्सल के द्वारा शासित होना चाहिए। यह है नेपोलियन बोनापार्ट का फोटो। He held the post of first consul from 1799 to 1804 and was the emperor of France from 1804 to 1814। The desire to set up a vast French empire led him to wage wars all over Europe। वो चाहते थे कि सारे यूरोप को अपना कब्जा करें, इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट को ज्यादा लड़ाई लड़ने पड़ा। He had notable victories over Austria, Germany and Spain, but he was defeated in Russia because of Russian resistance and द हार्श रशियन विंटर। उसको रशियन वार में डिफीट होना पड़ा क्योंकि उस टाइम विंटर था। रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन गॉट टुगेदर एंड डिफीटेड फ्रांस एट लेप्जिग इन 1813। रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलकर फ्रांस को डिफीट किए थे। कब? 1813 में। They took over Paris and Napoleon had to abdicate in 1814. He was exiled to Elba, a Mediterranean island in Tuscany, Italy। Soon after he escaped from there and returned to France। वो फिर चले आए थे and raised an army to fight once more। Again फाइट करने के लिए वो आर्मी ऑर्गेनाइज किए थे। The last major battle was fought in 1815 at Waterloo, Belgium। He was defeated, लेकिन वो डिफीट हो गए and exiled to St. Helens Island, where he breathed his last in 1821। वहां पर उसको मौत हो गया। The French Revolution paved the way for the modern nation state and also played a keynote in the birth of nationalism। फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म का और पिकअप दिया। Across Europe, radical intellectual influence by Napoleon wanted political transformation of Europe। नेपोलियन से बहुत सारे प्रभावित हुए। Napoleon's revolutionary armies carried the slogan of liberty, equality and brotherhood and ideas of liberalism and national self-determination। In 1815, at the end of the Napoleonic War, the major powers of Europe tried to restore the world dynastic system as far as possible, ignoring the principles of nationality in favor of legitimacy, the assertion of traditional claims to royal authority। वो लोग रॉयल अथॉरिटी को क्लेम किए, but people refused to obey their old rulers and they were influenced by new loyalty to their country। वो लोग सप्रेस होकर रहने चाहते नहीं थे और वो लोग इंडिपेंडेंट चाहते थे। The 19th century witnessed many nationalist movements
different parts of Europe, which changed the whole political, social, and economic order. These orders were highly influenced by the feeling of nationalism, justice, and liberty. उसका feelings था nationalism, justice, and liberty. आदमी लोग का feeling को change कर दिया गया, जो वो लोग देश के लिए सोचने लगे, justice पाने के लिए सोचने लगे और independent रहने के लिए भी सोचते थे. The feeling of nationalism and patriotism gave them courage to stand against despotic foreign rule. अगर thought process change होता है तो काफी सारा change होता है. The feeling of nationalism और patriotism उन्हों को courage install किया foreign rule को हटाने के लिए. The year 1848 is called year of revolution. इसीलिए 1848 को बोला जाता है revolution year in Europe. Revolutions broke out in almost all European countries. Though it fell, it strengthened their resolve to form their own nation state. Germany and Italy were the two important nations that emerged as united independent states. The unification of Italy and Germany inspired the Indian national movement. The architects of Italian unification movement, Cavour, Mazzini and Garibaldi became their political heroes and inspiration. वो लोग political hero बन गए और इन लोग से बहुत सारा change हुआ. यह है डेडलाइन, यह जो 1765 से 1800 तक दिया गया है. 1765 में क्या हुआ था? स्टाम्प एक्ट पास्ट. 1773 में बोस्टन टी पार्टी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बैटल ऑफ बंकर हिल. इस थ्रू से इवेंट को याद रख सकते हैं. ये रहा माइंड मैप. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इवेंट्स क्या रहा? स्टाम्प एक्ट, बोस्टन टी पार्टी, टेनिस कोर्ट और फॉल ऑफ द बेस्टिल और अमेरिकन रिवॉल्यूशन कॉज, बैकग्राउंड, result, American Revolution, French Revolution causes, background. The Pilgrim Fathers in 1608, a Puritan congregation from Nottinghamshire, England, decided to migrate to America in the ship Mayflower. उसको Pilgrim Father बोला जाता है, जो अमेरिका में रहते थे इंग्लैंड से जाकर. Boston Tea Party in Boston, a group of American people dressed as Red Indians boarded a ship and dumped crates of tea into the sea. It hastened the American War of Independence. Estates General, the French Assembly, which did not meet after 1614, was summoned in 1789 by King Louis XVI when the revolution began. First estate in French society consisted of the clergy. Second estate, the nobles and their families in French society. Third estate, the middle class consisting of peasants, artisans and workers in the French society. Tennis court of the oath taken by the members of the French National Assembly on June 20, 1789. The storming of the Bastille on July 14, 1789. French rebels attacked Bastille, the state prison, and released the prisoners, symbolizing the fall of autocracy. July 14, 1789 में बहुत सारे प्रिजनर को निकाल दिया गया, वो लोग को रिलीज कर दिया गया. ये रहा यही टॉपिक का सारांश. लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get earlier information. Thank you.